square root by division method. What is the rules? What is the conditions? What is the steps to find the square root by the division method? First of all, this number is given. Find the square root of 2304. We write this number just like that. After that, what to do? क्या करना है? Yes, we write it just like that. It is. And first of all, you will make the pair from right hand side. You will start the pair to complete the pair from right hand side. First pair and the second pair. You will start the pairing of the number, that is digits, from the right hand side. Right hand side से आप pair बनाना start करेंगे. If here is another digit like that 5, then this is unpaired, no problem. You will start from the making the pair from the right hand side. But if the pairs are complete, no problem. Okay. Now you will observe what is the first pair from the left hand side. It is 23. Now you will take a table and you read the table at the particular that time which is the table. जो टेबल है आपको उसको उतने ही बार रीड करना है. लाइक दैट 2 2 जा, 4 4 जा, 5 5 जा, 6 6 जा. Not you will read like that 2 3 जा, 2 9 जा. No, 9 9 जा. But your table not greater than this 23. So you observe which table you can select. कौन सा टेबल आप ले सकते हो कि आपको वो टेबल उतने ही बार पढ़ के इस नंबर से कम मिले, ज़्यादा ना मिले. So dear, 4 4 जा and 5 5 जा, it is more than 23. Yes, so you cannot take the table number 5. You will take only 4. 4 4 जा 16 and you will subtract it. उसके बाद आपको क्या करना है? subtract करना है, minus. So now 13 minus 6, it is 7. Yes, sir. And 1 minus 1 nothing, so no need to write here 0. After that you bring down this whole pair. In division you will take only single digit, but in the square root you will bring down whole pair, that is 0 4. So you write 0 4 here. This is the second step. Okay, क्या लाना है? पूरा pair लाना है. After that you will write the double of this number, means 2 times of this number. जो भी यहाँ पे लिखा है उसका आप डबल करोगे, 2 टाइम्स करोगे. तो 4 2 जा 8. You will write here 8 and examine how many times you can divide the 8 into the 70. 8 8 जा and 8 7 जा और 8 9 जा 72. It is more than. Yes. So you will take 8 8 ja, and you will write this 8 in both places, here and in this place also. And now multiply this 8 into this number and write here. 8 8 ja 64, carry 6, and 8 8 ja 64 and 70. Now again you subtract it. You will get nothing. The answer is 0. So the square root of this number is 48. 48. Finally you will write it as just like that. Square root of 304, 2304, 2304 equal to 48. And this is the answer of this question. एक बार फिर समझ लो, इसके 4 स्टेप्स है, 4 स्टेप्स है. नंबर 1, you will make the pair from the right hand side. After that you observe what is the first pair, what is the number, what is the digit in the first pair from left hand side, and select a table.
and you will read that table up to that time only. That is 4 times, 5 times, 6 times. तो आपने यहाँ पढ़ा, जो लिखा वो माइनस कर लेंगे. स्टेप नंबर सेकेंड, यू विल ब्रिंग डाउन द होल पेयर, नॉट इन पर्टिकुलर डिजिट और सिंगल डिजिट, होल पेयर. एंड इन थर्ड स्टेप यू विल राइट डबल ऑफ द क्वोशिएंट, जो भी लिखा गया है ऊपर उसका डबल लिखेंगे 2 टाइम्स, 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे. हम दो साइड से है ना, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4 का 2 टाइम्स 8 हो गया. अब जो 8 आया है यहाँ पे आप केवल 2 डिजिट देख लीजिए और अनुमान लगाइए कि कितने टाइम्स आप इसे डिवाइड कर सकते हैं. हमेशा ये कम रहेगा, ज़्यादा कभी नहीं, इक्वल कभी नहीं हो सकता है, कम रहेगा. तो 8 8 जा 64 मीन्स कैन बी डिवाइडेड. हो सकता है 8 8 जा भी ज़्यादा हो जाए, नो प्रॉब्लम, एक और कम कर देंगे. लेकिन चलो 8 8 जा करके देखते हैं. तो 8 8 जा, तो 8 यहाँ पे लिखना है, यहाँ भी लिखना है. And after that you will multiply this 8 only in this number and write all the result here. 8 8 is 64, carries 6, 8 8 is 64, carries 6, 70, and now subtract. So here nothing you will get and no another pair here. So the process is end and your answer is square root of 2304 is 48. This is the process. इस तरह से आपको इसके बाकी के सभी पार्ट करने. ठीक है. Okay dear.